नमस्कारः मित्राणि, अद्य आरभ्य अस्माकं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कार्ड् पुरातनानां प्रश्नपत्राणाम् आलोचना भविष्यति। प्रसङ्गेऽस्मिन् अद्य 2009 तमवर्षस्य जून् मासस्य द्वितीयप्रश्नपत्रविषये चर्चा भविष्यति। पूर्वे किं भवति स्म, यूजीसी नेट प्रवेशिकपरीक्षां प्रश्नपत्रत्रयम् आगच्छति स्म। एकं तु जनरल् प्रथमं भवति सर्वेषां कृते समानः, अन्य द्वितीयं तृतीयं च ओन् सब्जेक्ट् भवति। परन्तु इदानीं प्रश्नपत्रं द्वयम् आगच्छति। एकं तु जनरल् भवति सर्वेषां कृते, द्वितीयं तु ओन् सब्जेक्ट् भवति। अतः 25 कार्ड् इत्यस्य पुरातनं प्रश्नपत्रं वयं पश्यामः। पुरातनप्रश्नपत्र पठनेन अपि बहु ज्ञानं पृथ्वी भविष्यति। कीदृशाः प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। एतत् प्रश्नपत्रे, अस्मिन् प्रश्नपत्रे ये प्रश्नाः सन्ति तत्तु यूजीसी नेट कृते केवलं तथैव इम्पोर्टेण्ट् नास्ति, अन्य प्रवेशिकपरीक्षायामपि उद्योगक्षेत्रे अपि एतेषां प्रश्नपत्राणां वा प्रश्नानां महत्त्वं वर्तते। तर्हि आगच्छन्तु, वयं पश्यामः। विलम्बं न कृत्वा साक्षात् प्रति गच्छामः। पश्यन्तु, प्रथमः प्रश्नः अस्ति आवाहनं देवानां वहनश्च हवीसाम्। आवाहनं देवानां वहनश्च हवीसाम् इति अस्ति अग्निकर्म, बि विष्णुकर्म, सि रुद्रकर्म, डी इन्द्रकर्म। तर्हि समीचीनम् उत्तरम् आवाहनं देवानां वहनश्च हविषा अग्निकर्म। तदेव द्वितीयप्रश्नः पश्यन्तु, रसप्रदानं पुत्रवधः इत्यस्ति बृहस्पतिकर्म, डी रुद्रकर्म, सि सवितृकर्म, डी इन्द्रकर्म। तर्हि रसानुप्रदानं पुत्रवध इत्यस्ति इन्द्रकर्म। ऑप्शन तृतीयप्रश्नः अस्ति काणसंहिता वर्तते। काणसंहिता वर्तते कृष्णयजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, शुक्लयजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य। तर्हि काणसंहिता वर्तते शुक्लयजुर्वेदस्य। संख्यया स्वराङ्कनं भवति, संख्यया स्वराङ्कनं भवति। चतुर्थप्रश्नः यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य। तर्हि संख्यया स्वराङ्कनं भवति ऑप्शन बी सामवेदस्य। स्वाध्यायात्मनः प्रमादः, स्वाध्याय आत्मनः प्रमादः वर्तते ऑप्शन ए ईशोपनिषदि, ऑप्शन बी कठोपनिषदि, ऑप्शन सी तैत्तिरीयोपनिषदि, ऑप्शन डी ऐत्तिरीयोपनिषदि। तर्हि स्वाध्याय आत्मनः प्रमादः वर्तते तैत्तिरीयोपनिषदि, ऑप्शन सी समीचीनम् उत्तरम्। तदेव षष्ठप्रश्नः पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त वर्तते। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त वर्तते ऑप्शन ए ऋग्वेदस्य 10 मण्डले, ऑप्शन बी अथर्ववेदस्य 9 काण्डे, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मणस्य 1 काण्डे, ऑप्शन डी यजुर्वेदस्य 15 अध्याये। तर्हि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त वर्तते ऋग्वेदस्य 10 मण्डले। सर्वपाणि 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 सूक्तस्य छन्द वर्तते। सर्वपाणि सर्वपाणि छंद वर्तते ऑप्शन ए त्रिष्टुप, ऑप्शन बी जगति, ऑप्शन सी बृहति, ऑप्शन डी बृहत् गायत्री। तर्हि सर्वपाणि सूक्तस्य छंद वर्तते ऑप्शन ए त्रिष्टुप। बालगंगाधर तिलकानुसारं ऋग्वेदस्य कालः ख्रीष्टपूर्वतः वर्तते। बालगंगाधर तिलकानुसारं ऋग्वेदस्य कालः ख्रीष्टपूर्वतः वर्तते। ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 3500। तर्हि समीचीनम् उत्तरं भवति। अत्र विकल्प तु नास्ति एव, परन्तु 5000 ख्रीष्टपूर्व 6000 भवेत्। ऋग्वेदस्य रचनाकालः बालगंगाधर तिलकानुसारम्। अस्तु, तथैव पश्यन्तु माध्यन्दिनसंहितायाम् उद्दातस्वरस्य अङ्कनं भवति। माध्यन्दिनसंहितायाम् उद्दातस्वरस्य अङ्कनं भवति। ऑप्शन ए अधः, ऑप्शन बी उपरिष्टात्, ऑप्शन सी तिर्यक्, ऑप्शन डी किमपि नास्ति। माध्यन्दिनसंहितायाम् उद्दातस्वरस्य अङ्कनं भवति, किमपि नास्ति एव, ऑप्शन डी। मन्त्रो ब्राह्मणयोः सम्मिश्रणं वर्तते।
मंत्र ब्राह्मणयोः सम्मिश्रणं वर्तते। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी मंत्र ब्राह्मणयोः सम्मिश्रणं वर्तते कृष्ण यजुर्वेदे। 11 शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहितायां मंत्र संख्या वर्तते। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहितायां मंत्र संख्या वर्तते। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन डी 100 क्षम्यतां 1900। तर्हि समीचीनम् उत्तरं शुक्ल यजुर्वेदस्य माध्यन्दिन संहितायां तत्र मंत्र संख्या वर्तते ऑप्शन ए 1975। तथा प्रश्न पश्यन्तु। 12 शिक्षाग्रन्थेषु प्रतिपाद्य विषयः, शिक्षाग्रन्थेषु प्रतिपाद्य विषयः। ऑप्शन ए वेदार्थ निर्णय धर्म, ऑप्शन बी कालज्ञानम, ऑप्शन सी उच्चारण धर्म, ऑप्शन डी शब्द साधुतम। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव ऑप्शन सी उच्चारण धर्म। 13 प्रश्न अस्ति सत्कारवादे उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं भवति। सत्कार्यवादे उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं भवति। ऑप्शन ए सद असत, ऑप्शन बी अव्यक्त रूपेण सत, ऑप्शन सी उभय रूपेण सत, ऑप्शन डी व्यक्त रूपेण सत्। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव अव्यक्त रूपेण सत्। सत्कार्यवादे उत्पत्तेः पूर्वं कार्यम् अव्यक्त रूपेण सत् भवति। तथैव प्रश्नः अस्ति 14 सांख्यदर्शने पृथिव्याः प्रादुर्भावः अस्ति। सांख्यदर्शने पृथिव्याः प्रादुर्भावः अस्ति। ऑप्शन ए रस तन्मात्रात्, ऑप्शन बी गंध तन्मात्रात्, ऑप्शन डी शब्द तन्मात्रात्, ऑप्शन डी स्पर्श तन्मात्रात्। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव सांख्य दर्शने पृथिव्याः प्रादुर्भावः अस्ति। ऑप्शन बी गंध तन्मात्रात्। तथैव 15 प्रश्नः अस्ति त्रिविधं प्रमाणं विद्यते। त्रिविधं 3 टाइप्स ऑफ प्रमाण, त्रिविधं प्रमाणं विद्यते। ऑप्शन ए न्याय दर्शने, ऑप्शन बी वेदांत दर्शने, ऑप्शन सी मीमांसा दर्शने, ऑप्शन डी सांख्य दर्शने। तर्हि त्रिविधं प्रमाणम् एव सांख्य दर्शने, ऑप्शन डी। त्रिकालम् आभ्यन्तरं करणं, त्रिकालम् आभ्यन्तरं करणं। ऑप्शन ए सौदानुमते, ऑप्शन बी केशव मिश्र मते, ऑप्शन सी ईश्वर कृष्ण मते, ऑप्शन डी जैमिनी मते। तर्हि त्रिकालम् आभ्यन्तरं करणं भवति ऑप्शन सी ईश्वर कृष्ण मते। तथैव प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु वैदिक वेदान्ते जीवो ब्राह्मणयोः स्वरूपम्। वैदिक वेदांत दृष्ट्या जीव ब्राह्मणयोः स्वरूपं किं स्वरूपम् अस्ति? जीव ब्राह्मणयोः वैदिक वेदान्ते ऑप्शन ए जीव ब्रह्मैकम्, बी जीव एव पुरुष, सी जीव एव ज्ञानम्, ऑप्शन डी जीव एव ईश्वर। तर्हि ऐक्यतां दृश्यते एव ऑप्शन ए जीव ब्रह्मैव ऐक्यं दृश्यते, जीव ब्रह्म एक एव। अष्टादश प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु अध्यारोपो लक्षणमस्ति। अध्यारोप लक्षणमस्ति जीव ब्रह्मणः आरोप। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अवस्तुनि वस्तुआरोप, ऑप्शन सी वस्तुनि अवस्तु आरोप, ऑप्शन डी न किमपि। तर्हि अध्यारोप भवति वस्तुनि अवस्तु आरोप एव। अध्यारोप वस्तुनि अवस्तु आरोप। 19 प्रश्न अनुबंध अस्ति। ऑप्शन ए द्विविध, ऑप्शन बी त्रिविध, ऑप्शन सी चतुर्विध, ऑप्शन डी पंचविध।
तर्हि अनुबन्धः चतुष्टयं भवति। ऑप्शन सी समीचीनम्। सद् असद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् अस्ति। सद् असद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् अस्ति। ऑप्शन ए ज्ञानम्, ऑप्शन बी ज्ञान अज्ञाने, ऑप्शन सी अज्ञानम्, ऑप्शन डी न किमपि। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव सद् असद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् अस्ति। ऑप्शन सी अज्ञानम्। 21 प्रश्न न्यायदर्शने प्रमाणानि सन्ति। न्यायदर्शने प्रमाणानि सन्ति त्रीणि। ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तर्हि न्यायदर्शनदृष्ट्या एव प्रमाणानि भवन्ति। ऑप्शन बी 4 एव। तथैव प्रश्न पश्यन्तु। गगनारविन्दं किम् अभवत्? पश्यन्तु। गगनारविन्दं सुरभि अत्र को हेत्वाभासा। गगनारविन्दं सुरभि अत्र क हेत्वाभासा। ऑप्शन ए आश्रय सिद्ध, ऑप्शन बी स्वरूप सिद्ध, ऑप्शन बी व्याप्त सिद्ध, ऑप्शन डी विरोध। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव आश्रय सिद्ध। ऑप्शन ए न्याय अनुसारं प्रमेयाः सन्ति। न्याय अनुसारं न्यायदर्शनानुसारं प्रमेयाः सन्ति। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन डी 12, ऑप्शन डी 13। 10, 11, 12, 13। तर्हि न्यायानुसारं प्रमेयाः भवन्ति 12। ऑप्शन सी समीचीनम् उत्तरम्। प्रश्न बेमादिकं पटस्य अस्ति। बेमादिकं पटस्य अस्ति समवायिकारणम्, ऑप्शन बी असमवायिकारणम्, ऑप्शन सी निमित्तकारणम्, ऑप्शन डी किमपि नास्ति। तर्हि बेमादिकं पटस्य अस्ति निमित्तकारणम्, ऑप्शन सी समीचीनम् उत्तरम्। एकाल प्रत्ययः। ऑप्शन ए कृत, ऑप्शन बी सान, ऑप्शन सी अपृक्तम्, ऑप्शन डी तिङ्। तर्हि अपृक्तम् एकाल प्रत्ययः, ऑप्शन सी समीचीनम् उत्तरम्। तक् तवतु किमुच्यते। तक् तवतु किमुच्यते। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी सवर्ण। तर्हि तक् तवतु भवति निष्ठा। विभाषा किं लक्षणम्। विभाषायाः किं लक्षणम्। ऑप्शन ए सुप्त्यन्तम्, ऑप्शन बी सामर्थ्यम्, ऑप्शन सी परसन्निकर्षा, ऑप्शन डी न वा इति नवेति। तर्हि विभाषा किं लक्षणं नवेति, ऑप्शन डी समीचीनम् उत्तरम्। नदी संज्ञा उल्लेख्यते। न्यूल् रुच्यौ, बी स्वौ, सी ड्यौ, ऑप्शन डी यूस्त्राक्ष्यौ। तर्हि नदी संज्ञा उल्लेख्यते, ऑप्शन डी यूस्त्राक्ष्यौ नदी। अदेङ् इत्यस्य अत् एङ् इत्यस्य का संज्ञा भवति। ऑप्शन ए भ, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी घु। तर्हि अदेङ् गुणः, ऑप्शन सी समीचीनम् उत्तरम्। 29 प्रश्न नंबर 30 पश्यामः। 30 प्रश्न। प्रातिपदिकं किं। प्रातिपदिकम् अर्थवत् अधातुर् अप्रत्यय प्रातिपदिकम्। वृद्धि आदिच
पदम सुप्त्यन्तं पदम टी अचः अन्त्यादि टी। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव सी। 31 साधकतमं कारकं किमुच्यते? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अधिकरणम, ऑप्शन सी करणम, ऑप्शन डी उपादानम। तर्हि साधकतमं कारकं किमुच्यते? साधकतमं कारकं करणमुच्यते। ऑप्शन सी समीचीनम। 32 अंतर्धौ अंतर्धौ जेनम अदर्शनम इच्छति अत्र का विभक्ति? अंतोद्धौ जेनम अदर्शनम इच्छति अत्र का विभक्ति? ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी षष्ठी, ऑप्शन सी सप्तमी, ऑप्शन डी तृतीया। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव ऑप्शन बी षष्ठी। पश्यन्तु अत्र विकल्पत्तु षष्ठी न भविष्यति। अंतोधौ जैनं दर्शनम् इच्छति तत्र पंचमी भविष्यति। समीचीनं विकल्पं नास्ति एव, पंचमी। पंचमी अंतर्धौ जैनं दर्शनम् इच्छति पंचमी विभक्ति भविष्यति। संख्यापूर्व कः समासः? संख्यापूर्व कः समासः? ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी दिगु, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तर्हि अत्र संख्यापूर्वः भवति दिगुः। ऑप्शन सी समीचीनम् उत्तरम्। उपकृष्णम् इत्यस्य पदस्य विग्रहः विवर्तते। ऑप्शन ए कृष्णस्य सादृश्यं, कृष्णस्य पश्चात्, कृष्णस्य समीपं, डी कृष्णं प्रति। समीचीनम् उत्तरं कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम्। ऑप्शन सी कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम्, कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम्। 35 अकुह विसर्जनीयानाम् उच्चारणं स्थानं किं भवति? अ क वर्गीय वर्णानां, ह विसर्ग एतेषाम् उच्चारणं स्थानं भवति। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी तालु। तर्हि अकुह विसर्जनीयानाम् ऑप्शन सी कंठ। मूर्धन्य भवति, मूर्धन्य भवति। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन सी इड, ऑप्शन डी न। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव ड, मूर्धन्य भवति। तथैव 37 यरळवः वर्णः, यरळवः वर्णः। ऑप्शन ए स्पृष्टा, ऑप्शन बी अन्तस्थः, ऑप्शन सी ईषत् स्पृष्टा, ऑप्शन डी अनुनासिकाः। तर्हि यवरळ यरळव वर्णाः भवन्ति अन्तोस्था। सी हितोपदेशस्य रचयिता अस्ति, हितोपदेशस्य रचयिता अस्ति। ऑप्शन ए नारायण, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी दंडी, ऑप्शन डी बाण। तर्हि हितोपदेशस्य रचयिता अस्ति ऑप्शन ए नारायण, पंडित नारायणः। 39 नाटकस्य उदाहरणमस्ति। मूर्च्छकटिकम् ऑप्शन ए, बी मालती माधवम्, ऑप्शन सी बेणीसहारम्, ऑप्शन डी त्रिपुर विजय। तर्हि समीचीनम् उत्तरं बेणीसहारं तु नाटकमेव। प्रतिमा नाटकस्य रचयिता वर्तते। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी भट्टनारायण, ऑप्शन डी भास। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव भासः। ऑप्शन डी समीचीनम् उत्तरम्। 41 प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भवति सौहृद्यम् इति वाक्यस्य कर्ता वर्तते। अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भवति सौहृद्यम् इति वाक्यस्य कर्ता। ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी श्रीहर्ष। तर्हि कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तले वर्तते। रमणीयार्थ प्रतिपादिक शब्दः काव्यम् इति उक्तम्। ऑप्शन ए
कुन्तकेन, ऑप्शन बी जगन्नाथेन, ऑप्शन डी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी आनंदवर्धन, ऑप्शन डी मन्मथेन। तर्हि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम् अस्ति जगन्नाथस्य मतानुसारम्। ऑप्शन बी समीचीनम् उत्तरम्। तर्हि आनंदवर्धनानुसारम् आनंदवर्धन आचार्य मतानुसारं काव्यस्य आत्मा। आनंदवर्धन उक्तं धन्यलोके काव्यस्य आत्मा भवति ध्वनि। तत्र डी समीचीनम् उत्तरं। करुणरसस्य स्थायी भावः, करुणरसस्य स्थायी भावः कः? ऑप्शन ए भयम्, ऑप्शन बी क्रोधः, ऑप्शन सी युगुप्सा, ऑप्शन डी शोकः। तर्हि करुणरसस्य स्थायी भावः भवति शोकः। मदने भाति कलभः प्रतिपदेन, मदने भाति कलभः प्रतापेन महीपतिः इति वाक्यं कस्य अलङ्कारस्य उदाहरणं भवति? मदने भाति कलभः प्रतापेन महीपति इत्यस्य वाक्यस्य उदाहरणं वर्तते उपमा अलङ्कारस्य, ऑप्शन बी दीपक अलङ्कारस्य, ऑप्शन सी अर्थांतर न्यास अलङ्कारस्य, ऑप्शन डी दृष्टान्त अलङ्कारस्य, ऑप्शन डी दृष्टान्त अलङ्कारस्य। 46 प्रश्नः अस्ति सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति, सौन्दर्यम् अलङ्कार इति प्रतिपादितम्। ऑप्शन ए रूयकेन, ऑप्शन बी रुद्रटेन, ऑप्शन सी भाम्येन, ऑप्शन डी वामनेन। तर्हि सौन्दर्यम् अलङ्कारम् इति वामनेन उक्तम्, वामनेन उक्तं सौन्दर्य अलङ्कारः इति, सौन्दर्यम् एव अलङ्कारः। 47 विश्वनाथः अस्ति ऑप्शन ए रसोवादी, ऑप्शन बी अलङ्कारवादी, ऑप्शन सी ध्वनिवादी, ऑप्शन डी वक्रोक्तिवादी। तर्हि विश्वनाथः अस्ति रसोवादी, ऑप्शन ए समीचीनम् उत्तरम्। भरतेन उक्तः अलङ्काराः सन्ति, भरतेन उक्तः अलङ्काराः सन्ति, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तर्हि 4 एव। 46 4 एव। भरतदृश्यनाट्यशास्त्रस्य लेखकः आचार्य भरत, तस्य मतानुसारम् अलङ्काराः एव 4 एव। 49 प्रश्न गंगायां घसः, गंगायां घसः इत्यत्र वर्तते उपादानलक्षण, ऑप्शन बी गौणीलक्षण, ऑप्शन सी प्रयोजनवती लक्षण, ऑप्शन डी सारपलक्षण। तर्हि गंगायां घसः इति प्रयोजनवती, ऑप्शन सी समीचीनम् उत्तरम्। व्यक्तिविवेकस्य रचयिता वर्तते, व्यक्तिविवेकस्य रचयिता वर्तते, ऑप्शन ए अभिनवगुप्ता, ऑप्शन बी भट्टनायक, ऑप्शन सी भट्टोत्पतः, ऑप्शन डी महिमा भट्ट। तर्हि व्यक्तिविवेकस्य रचयिता वर्तते ऑप्शन डी महिमा भट्टः। तर्हि मित्राणि एतदेव 2009 तमवर्षस्य जून् मासस्य 25 कार्ड् संस्कृत UGC नेट पेपर 2 प्रश्नपत्रम्। अस्तु, धन्यवादः मित्राणि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं, जय जगन्नाथ, जय माता।